Hello friends, in this video I'm going to tell you some important vocab that you can use to score high marks in Ielts. So let's start. The first word is facilities. So in place of facilities, you can use this word, that is amenities. Facilities means सुविधाएं, जिनको आप हिंदी में सुविधाएं बोलते हैं. Okay, facilities, amenities. Then help or support. In place of help or support, you can use this word assistance. Okay, then large cities. बहुत बड़ी बड़ी जो cities होती हैं उन्हें हम metropolitan cities कहते हैं, तो हम उसके लिए large cities के लिए यूज़ कर सकते हैं metropolitan. Then you have sometimes. In place of sometimes, it is a common word you can use occasionally. Then for decrease and decline, you can use diminish. Then for development, you can use advent. Then blessing and benefit, like technology के लिए आप use कर सकते हैं. It is technology is a boon, so it is a blessing, it is a boon. In place of these two common words, you can use boon. Then proof. For proof, you can use evidence. देन इम्पॉर्टेंट हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो ये वाला वर्ड आप ना यूज़ किया करें. इसकी जगह पे आप ये यूज़ करें इंडिस्पेंसिबल या फिर एसेंशियल. ओके, देन यू हैव पॉल्यूट. यू कैन यूज़ कंटामिनेट फॉर दैट. पॉल्यूट, कंटामिनेट. ओके, देन वी हैव पीपल. इन प्लेस ऑफ पीपल यू कैन यूज़ इंडिविजुअल और मासेस. जब आपको आइल्स में पैराफ्रेसिंग करनी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे पीपल अगर आ जाए तो उसकी जगह पे आप इंडिविजुअल और मासेस लिख सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन आइल्स. देन नेसेसरी. इन प्लेस ऑफ नेसेसरी यू कैन यूज़ मैंडेटरी. नेसेसरी मतलब बहुत ज़रूरी, तो उसके लिए आप मैंडेटरी यूज़ कर सकते हो. देन बैड और नेगेटिव, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डेट्रीमेंटल. ओके, सो बैड और नेगेटिव के लिए आप डेट्रीमेंटल यूज़ कर सकते हो. आई होप व्यूअर्स यू लाइक दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विथ मोर न्यू vocab of words for IELTS for you. Thank you for watching and please subscribe and like the channel.